Namaste. Welcome back to my YouTube channel eEducator. I hope you like my previous videos. अभी बहुत सारे चैप्टर के अपलोड किए, जो बाकी उसको भी अपलोड मैं करूँगा यहाँ पर. सो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगे. Here we discuss about textbook exercise. Okay, social science, standard 10, lesson number 9, forest and wildlife resources. Textbook exercise. Here is a discussion of a textbook exercise here. So if you are not subscribed, subscribe and share with your friend. Let's start the discussions. Okay, question number 1. So before that, let us discuss that what is the weightage of the chapters in the board exams. Lesson number 9, weightage of a board exams के अंदर ये total 4 marks का 4 marks का weightage है. Lesson number 9 has a 4 marks weightage in a board exam. What will be there in the board exam? Okay, that is there will be a 1 questions in a map. एक क्वेश्चन किस में होगा? मैप में होगा. नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायो रिजर्व, द मैप विच हैज बीन गिवन इन अ टेक्स्ट बुक. देयर विल बी अ 1 क्वेश्चन. लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन वाज द वेलावदर नेशनल पार्क का एक क्वेश्चन दिया गया था. सो देयर विल बी 1 क्वेश्चन ऑफ अ मैप इन अ लेसन नंबर 9. लेसन 9 लेसन नंबर 9 के अंदर से आपको एक मैप का क्वेश्चन आएगा ही. ओके, 8 का भी एक होता है. ओके, 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 8 का होता है, 9 का भी एक क्वेश्चन आता है. टाइप्स ऑफ सोइल हमने पहले डिस्कस किया. तो एक सोइल का क्वेश्चन रहेगा. 9 के अंदर से ये क्वेश्चन रहेगा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसके टोटल वेटेज, जो टोटल वेटेज है वो कितना है? 4 मार्क्स का है. अब 4 मार्क्स के अंदर से 4 मार्क्स में से 1 मार्क्स किस में है? मैप का है. बाकी बचे 3 मार्क्स. सो 3 मार्क्स में ए लेसन के अंदर से कभी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है. देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार एग्जाम के अंदर ये 2 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव है. लिसन, लास्ट एग्जाम देयर वाज अ 3 ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस एग्जाम. लास्ट एग्जाम में ये तीन ऑब्जेक्टिव पूछे गए. ओके, 1 एज अ ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया था, 1 एज अ फिल इन द ब्लैंक्स में था, एंड 1 एज अ एमसीक्यू के अंदर एज ए पूछा गया था. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ब्लैंक्स दोनों में, ऑप्शन दोनों में रहते ही है. सो देयर वाज अ 3 ऑब्जेक्टिव फ्रॉम अ लेसन नंबर 9. पर हर बार ऐसा नहीं होता है. इससे पहले वाले एग्जाम में देखोगे तो देयर वाज अ 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, देयर वाज अ 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क एज ए ऑब्जेक्टिव्स, एंड देयर वाज अ 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स. तो ये लेसन ऐसा है जिसमें जो ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है. एक मैप का क्वेश्चन रहेगा तो वो तो फिक्स ही है. ओके, एक क्वेश्चन मैप का रहेगा, इट इज अ फिक्स है. बट इन दिस रिमेनिंग ऑफ 3 मार्क्स माइट बी अ माइट बी अ 3 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. ओके, 3 ऑब्जेक्टिव्स, और अगर ये नहीं होगा तो 1 एज ऑब्जेक्टिव्स एंड ओके एक 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स. 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स से मिला के टोटल वेटेज कितना हो जाएगा? 4 मार्क्स. हो लास्ट जो एग्जाम हुआ मार्च 25 का जो एग्जाम हुआ, इन द लास्ट मार्च 25 एग्जाम के अंदर इफ यू सी द पेपर, देयर वाज अ 3 ऑब्जेक्टिव फ्रॉम लेसन नंबर 9. इट वाज इजी, बहुत इजी ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे जो लेसन नंबर 9 के थे वो. So we prepared such answer in such a way that we also prepared the objectives here, and those important part of a lesson के अंदर the different animal project के दिए गए, and okay types of forest जो दिया गया वो 2 मार्क्स के अंदर important है. So let's start discussion here. जो टेक्स्ट बुक का है जो दिया गया है वही देखेंगे यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. राइट अ डिटेल नॉट ऑन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. राइट अ डिटेल नॉट ऑन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पर लिखना है हमें. सो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया. डिफरेंट क्राइटेरियाज आर देयर. फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वे. In standard 9 we also discussed classification of forest and based on a climate. Climatic based पर हमने देखा था कि deciduous forest, rainy forest. Okay, हमने जो forest देखे थे total. So here forests are classified on other criteria. So types of forests according to the administration.
As per the, look at these questions can be asked in the exam. There will be the kind of question there, write the types of forest based according to the administration. तो आपको administration के हिसाब से लिखना है, types of forest according to the administration, how they are managed, how they are controlled on the basis of administrations here. Okay, so the reserved forest, three categories are here. One is a reserved forest. Reserved forest means such forests which are under the control of a government directly. Reserved forests, these are controlled by the government who control these reserved forests. And there is a restriction of lumbering, collection of woods or lumbering, cutting of trees are not allowed there, collection of woods are not allowed there, or for pasturing, okay, grazings of animals are totally banned in these reserved forests. Controlled by the government, peoples are not allowed to collect the woods, not allowed to cut the trees, or not allowed to graze the animals here in reserve forest. Protected forest, okay, protected forest इसके अंदर these forests are looked after by administration and local people are permitted. Somehow it also controlled by the government. In these protected forests, somehow some local people are permitted to collect the woods. Collect the woods and graze the animal. Which kind of woods? जो trees जो सूख गए उस टाइप के जो trees है, woods है, उसको collect करने के लिए permission दी जाती है. Graze animals without causing any harm to the trees है. They are allowed, so they are not allowed to cut the trees. Okay, जो tree के branches है वो okay गिर गई है, सूख गई है, उस टाइप के branches है, they were allowed to collect those okay woods. And they were allowed to graze the animals without causing much more damage to the trees and forest. Okay, third classification, unclassified forests, which are not classified in reserve protect, and these forests are still not classified. There is no restriction on the felling of tree felling or animal grazing. ऐसे फॉरेस्ट है भी नहीं अभी. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फेलिंग. ट्री फेलिंग मीन ट्री कटिंग एंड एनिमल ग्रेजिंग. एनिमल ग्रेजिंग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के हिसाब से देखिए. ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट का स्टेट फॉरेस्ट ऑन द इन द नेम ऑफ ऑनरशिप के हिसाब से स्टेट के अंदर जो फॉरेस्ट आते हैं. Central or state government control such forests. Most of these forests control most of the country's forests which are controlled on the state forests. जैसे गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सॉरी रिजर्व्ड फॉरेस्ट था उसको हिसाब से ये ऑनरशिप के हिसाब से काउंट क्लासिफिकेशन किया जाए तो स्टेट फॉरेस्ट, सेंट्रल फॉरेस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे आर कंट्रोल. ऑलमोस्ट ऑल द फॉरेस्ट इन द कंट्रीज आर कम्स अनदर स्टेट फॉरेस्ट इन दिस कैटेगरीज. Communal or community forest, these local self institutions which are local self institution, gram panchayat, municipalities, corporations, district panchayats, which have the control over these forests. These forests are controlled by the community or communal forest इसको बोला जाता है. Communities, local self governance generally control this forest. Private forest. So this such kind of a forest is there. What such a forest is owned by the individual. Maybe individual persons has a forest. Such forests are found more in Odisha के अंदर ये forest type के हैं. Odisha, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये forest पाए जाते हैं. Some of these forests are haphazardly condition. Haphazardly means almost all the trees are cut there. Haphazard condition are not in good conditions. They are already destroyed there. Some of them are totally barren. Totally barren. कोई भी tree नहीं है, सिर्फ सब कुछ काट दिया गया वहाँ पर. ट्रीज वर नॉट देयर, टोटली बैरन जैसे हो गए अभी जो जितने भी प्राइवेट फॉरेस्ट है वो. स्टेट द रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन. सो व्हाट आर द रेमेडीज टू conserve the forest or for the protections of the forest. So research should be carried out to find options of woods. We are using woods in daily lives. We need to find the options ऑफ वुड. वुड की जगह पर क्या हम यूज़ कर पाए, इनका ऑप्शन हमें लेना चाहिए. अनदर wherever the trees are to be cut invariably, whatever the trees we cut, so for the development of work or necessary what development of work, like a construction of roads, we or construction of a bridge, railway track बनाने के लिए, so if required for the development we used to cut the trees. But same time if we cut that 100 trees, तो उसके सामने 100 दूसरे ट्रीज कहीं पर लगाने चाहिए. सो न्यू ट्रीज ऑफ द सेम स्पीसीज शुड बी ग्रोन दैट वी कैन मेंटेन द नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ अ ट्रीज देयर.
So whatever the trees, whatever the trees we cut, that same species of a trees, the same species should be newly trees should be grown here. There should be a total ban on cutting trees which are not fully grown. Those trees which are not fully grown, they are not allowed to cut. Another, the industries which are receive the raw material from forest. The industry which receive raw material from the forest, means the industries like paper making industries are there, furniture industries are there. They receive the raw material. कहाँ से raw material है? From the forest here. They should be compelled. They made compulsory for them to do afforestation. Afforestation means do the plantations, to plant the new trees, to grow the trees, and to take care of the trees. We need to make a mandatory for them, for the future need, for the future requirement. Next, under the name of ecotourism, the forest cover should not be damaged. Ecotourism, tourism activities has been increased into the forest areas. People are allowed to enter into the forest areas. So under the names of ecotourism, forest should not be damaged here. Should not be damaged here. Construction activity should not be allowed. The construction of a road ऐसे भी कर दिए जाते for the tourism purpose के लिए. So it should not be damaged the forest cover and should be strictly controlled. The tourism activity, ecotourism activity. Ecotourism activity should not be allowed in such a way which damage the forest. Widespread public awareness. Public awareness program should be organized among the local people. Awareness program for the local people. Those local people, those are the people who are living near the forest, or those are the program for the people to create awareness about the trees here. Trees के बारे में, forest के बारे में, the importance of forest should be explained to those people here. Next, the importance of forests and their conservation strategies should be included in the syllabus. Importance of what are the importance of forest and what are the strategy? How we can conserve the forest, how we can protect the forest, how we can save the forest. That kind of strategy should be included in the syllabus and school and colleges, where students can aware about the importance of a forest, importance of a trees, and they can implement them into the life, and they can also implement some strategy which are for the protections of the forest. So as part of the lesson is given in lesson number, ये आपका 9-10 में दिया गया, 9 के अंदर दिया गया, previous standard के अंदर भी ये lesson आता है regarding conservation of trees and forests के बारे में. So we should implement those strategies to protect the forest or conservation of a forest. Social forestry. Social forestry means with the use of a society, forestries can be carried out. And agroforestry, agriculture's जो एरिया होता है वहाँ कर आप प्लांटेशन करके, बैरन लैंड है वहाँ पर प्लांटेशन करके आप फॉरेस्ट्री कर सकते हो. Should be developed innovatively by taking plant shape and necessary of fodders and firewoods here. Social forestries can be done outskirts of village areas, cities areas, where the local peoples are engaged to plant trees there, and they can be used for the fodder for the animal. Their trees can also be used for the firewood there. So for social forestry, agroforestry can you can grow those plant borders of borders of agriculture field. So that can be plants or trees जो होते हैं that can be used for firewood, और आगे जाके वो fodder के लिए भी farmers use कर सकते हो. In place of firewood, alternative options like a solar energy in place of a firewood. Energy is generally firewoods, the woods which are used for the cooking के लिए use किया जाता है. Some industries may also use the firewoods to take the energy from the wood. Fire जलाने के लिए use किया जाता है. Alternative options निकालना चाहिए. दूसरा option like a solar energy use करना चाहिए. Natural gas should be used here. It should be implemented so we can reduce the use of wood. So in order to make the process of tree grow faster and healthier, infested trees should be removed. Those trees were infested, जो infested tree है, मतलब जो trees ऐसे हो गए जिसकी वजह से दूसरे trees को भी नुकसान हो सकता है, वो ट्री को निकाल देना चाहिए. सूख गए हैं या उसके अंदर कोई डिजीज आ गया है तो वो ट्री को काट कर वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए. So forest fire cause heavy damages to the forest.
separate system of forest at national level should be developed. So forest fire, once fire start, is very difficult to dose a forest fire. So if we have a systems to dose a forest fire, so dosing the fire, आग को बुझाने के लिए कि हमारे पास सिस्टम्स होना चाहिए. अगर फॉरेस्ट फायर होती है तो उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है. आपने लास्ट में देखा हो कैलिफोर्निया के अंदर कितना बड़ा वो फायर हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारा फॉरेस्ट को, पूरे फॉरेस्ट ही जल जाते हैं. सो इफ़ यू हैव द सिस्टम, सेपरेट सिस्टम फॉर फॉरेस्ट फायर जो होता है उसको बुझाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें सिस्टम डेवलप करना चाहिए. एंड अनदर, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मेजर्स ट्रांसपोर्टेशन एंड so due to the increase in means of transportation in terms of vehicles which are increasing on the road and easy travel, thousands of pilgrims reach to religious places, or some of the religious places which are located in the forest areas, in the mountainous area. So because of transportation facility which are easily available, air route, train, okay, roadway, so easily are available. So number of peoples they visit into the pilgrimage places, okay, like a different name, they attend the bhandaras. They are bhandaras which are open for the pilgrimage places, खाने के लिए जो ओपन किए जाते हैं. Even they are the fairs are organized there. Okay, परिक्रमा, circular trail like जूनागढ़, okay, लिली परिक्रमा are there. Okay, नर्मदा रिवर की परिक्रमा की जाती है. So number of people who gather there and उसकी वजह से भी फॉरेस्ट को नुकसान होता है. At the time the litter should be whatever the कचरा जो फेंकते हैं वहाँ पर, लाइक प्लास्टिक लेकर आते हैं, जो भी लेकर आते हैं, डस्ट वट एवर देयर, द लिटर शुड बी क्लियर प्रॉपरली. वो जो फेंका हुआ है वो क्लियर होना चाहिए. अदरवाइज द फॉरेस्ट आर पोल्यूटेड. प्लास्टिक शुड बी बैन टू यूज इनटू द फॉरेस्ट रीजन और फॉरेस्ट एरियाज. एन एरिया शुड बी डिमार्केट द रिजर्व फॉर एनिमल पेस्चर्स. एनिमल पेस्चरिंग के लिए एरिया को डिमार्केट करना चाहिए. डिमार्केट मतलब उसके लिए बॉर्डर बनाना चाहिए कि उससे आगे एनिमल ग्रेजिंग अलाउ नहीं है. वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स जो है उनको अलाउ किया जाएगा. अगर डोमेस्टिक एनिमल ज़्यादा ग्रेजिंग करेंगे तो मे डिफ़िकल्ट फॉर द वाइल्ड एनिमल जो है, जो कि हर्बीवरस एनिमल है, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर. सो रिजर्व फॉर एनिमल पेस्चरिंग के लिए डिमार्क होना चाहिए. थर्ड नंबर, डिस्क्राइब द वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. इसमें ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं उसमें से एक एक प्रोजेक्ट हो सकता है. okay, 1-2 मार्क्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर में आस्क 1 प्रोजेक्ट्स हियर. डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर गिवन हियर. वेरियस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. विच आर दिस? वन इज गिवन ऑन टाइगर प्रोजेक्ट. okay, tiger project. Due to the unrestricted illegal hunting and deforesting, there was a big danger to the existence of a tiger. okay, before जब देखा जाए आज से 100 of years देखे तो नंबर ऑफ टाइगर्स वाज मोर इन इंडिया. बहुत ज़्यादा ही टाइगर थे इंडिया के अंदर, बट अभी बहुत ही कम टाइगर है यहाँ पर. मोर देन 50,000 टाइगर वाज देयर. प्रेजेंटली 2-3,000 टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया हियर. सो अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग. अनरिस्ट्रिक्टेड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था टाइगर को मारने के लिए. इलीगल हंटिंग्स ऑफ एंड डिफॉरेस्टेशन कॉज अ वेरी बिग डेंजर टू दिस tiger. Such circumstances, this project was started to save tiger was started in 1971. Save tiger or tiger project, which was started in 1971 to protect the tiger. So under this project, a series of steps has been taken to keep a natural habitat protected. And under the project Save Tiger or Project Tiger, number of steps has been taken here for the protection of a natural habitat of a tiger and maintain the ecological balance of national level. Whatever the ecological policies are maintain the ecological balance where a tiger can survive here. Forest क्या होना चाहिए, मतलब वहाँ पर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया, रिजर्व कर दिया टाइगर के लिए. वेयर अदर्स पिलग्रिमेजेस है, ह्यूमन बींग्स है, अदर लोकल पीपल्स आर नॉट अलाउ इन दोज रीजन. सो टिल नाउ दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन 44 रीजन्स. कितने टोटल रीजन है? हाउ मेनी टाइगर प्रोटेक्टेड रीजन, टाइगर रिजर्व्ड एरिया, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बोल सकते हो. 44 टाइगर, 44 रीजन्स जो टाइगर रिजर्व्ड एरिया है इंडिया के अंदर. एलिफेंट प्रोजेक्ट
for the protections of elephant. This project was started in 1992 and this main objective क्या था? To provide elephant protections and their natural habitats. Natural habitat जो रहने की जगह जो होती है forest के अंदर जो रहती है, and protect habitats and their migratory corridors. And to protect habitats, okay, natural habitats एक ही आएगा यहाँ पर, okay, elephant protection in their natural habitats and protect ये वाला ये नहीं आएगा, ओके, ये लाइन नहीं आएगी. एंड देयर माइग्रेटरी कॉरिडोर में जो एलिफेंट्स जो होते हैं दे आर माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर फॉर इन सर्च ऑफ फूड वाटर के लिए एक जगह से दूसरी के जब जाते हैं एज पर द सीजन वाइज. सो कॉरिडोर रहता है उसका जो रोड रहता है या रास्ता रहता है जो भी बोलते हो, वो माइग्रेटरी जो कॉरिडोर रहता है एक जहाँ से जाए वहीं वापस आती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया. Today there are about 26 protection zones for elephants in their country. For the protection of elephant, 26 protected area है. Besides this project also works as a maintenance of domesticated animal. Domesticated animal जो animals elephant ज़्यादातर domesticated किया जाता था और उसको सर्कस के अंदर निकाल कर और गांव के अंदर घुमा के अलग अलग तरीके से उसके पास स्टंट करवा के पैसे भी लेते थे. Okay, so वो अभी as per the protection of elephant, a domesticated elephant are not allowed there. Rhino project, Rhino project जो है, this project is started for the protection of one-horned rhino. So it started for the protection of a one-horned rhinos. Okay, one-horned rhino ये जो एक हॉर्न रहता है इसके ऊपर सर के ऊपर, one-horned rhino of India, and in the India most of rhinos are found in Assam state. सबसे ज़्यादा rhinos कहाँ पर है? Most of the rhinos are found in Assam state. According to the strategy of Rhino Vision 2020, it increased the number of rhinos target to 3,000. Main target to increase the number of rhino कितना increase करना है? To 3,000. Fourth number, crocodile. This species of alligator, crocodile alligator का species है which is found in freshwater crocodile के लिए freshwater on the verge of extinction in a decade of 1970 में से situation था कि freshwater का crocodile extinction पर आ गया था. If not taken care, it will extinct on the earth. So the government of India took timely steps to start these project. And crocodile के बाद आता है vulture project. Vulture is a cleanliness worker of the nature. Which bird is a cleanliness worker of nature? Nature को clean करने का काम करता है. क्या कौन करता है? Vulture. It provide a cleanliness. It eat the dead animals. उनका खाने का काम करता है vulture. Vulture का photographs. It eats the meats of a dead animals. What they eat? It eats the meat of a dead animal. And there are about how many subspecies of vulture? गीत जो बोलती हो vulture की कितनी species है? इंडिया के अंदर 9 subspecies of a vulture in India. Due to the unusual decrease in this number, the project was started in 2004. Unusual decrease of a vulture, the number of vulture which are reducing. So for the protection of 2004, this vulture project has been implemented by the government of India. Snow leopard project, leopard of a snow के अंदर जो पाए जाते हैं वो leopard के लिए है. So this species which found at the altitude height of a 3,000 meter in Himalaya. So in the height of Himalaya, altitude of a 3,000, height of a 3,000 meter, these snow leopards are found, and for the protection of this snow leopard, this project has been implemented. They live in a snow only, snow के अंदर रहते leopards, and this project was started in which year? In 2000, with the purpose to increase knowledge about the snow leopards among the local people, so the people would aware about and protect it here. So it for the protections of a snow leopard 2000 के अंदर शुरू किया गया था ये. Answer in brief. What is mean by bioreserve zone? Okay, bioreserve zone आपके national park, wildlife sanctuaries होगा, एक bioreserve zone लिया गया. What is mean there? It is formed according to the international norms. International norms, terms and condition के हिसाब से बनाया जाता है. And this purpose to protect the physical. So bioreserves के अंदर it not include only for the protections of animals or birds. It includes the protection of physicals. I mean they are including physical protection of a soil, their mountains, जो आएगा rivers आ जाएगा,
ओके ट्रीज आएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, सब कुछ वहाँ पर आ जाएगा. फिजिकल थिंग्स विच आर फाउंड देयर. फिजिकल्स एंड कल्चरल कल्चरल द पीपल, लैंग्वेज, फूड, द लाइफस्टाइल्स, the celebrations, they are protected in bioreserve. So in the bioreserves is a concept of bioreserve is a vast, not only for the protection of animals or birds or only for the forest here. It includes for the protections of a cultural diversities of a regions are and these bioreserves are included in vast areas, large area के अंदर implement किया जाता है. It's a physical and cultural diversities of any region. And beside the vegetation तो होता है vegetations, the insect, land, these are okay, lands of that areas are lifestyles of the people living there are also protected with the vegetations, with the protection of vegetation, okay, protection of a forest के साथ उसके साथ insects, birds, animals जो भी आता है वो सब कुछ लैंड ऑफ दिस एरिया, लैंड के अंदर माउंटेन जो भी सोइल्स आती है वो सब कुछ आ जाएगी वहाँ पर. लाइफ स्टाइल व्हाट ऑफ द पीपल्स हु आर लिविंग देयर, ओके, द लैंग्वेजेस, फूड, वो जो भी जो आता है पीपल इन द लिविंग देयर आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, उसके लिए भी प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलता है. And special arrangements are created for research and training about the bioreserve. Special trainings are carried out, research are carried out, how for the protection of this lifestyle of a people, for the protection of vegetation in this bioreserve. And the average area of such zone is a 5,000 square kilometer. Average minimum जो होता है वो is larger than 5,000. Minimum 5,000 होता है. 5,000 square kilometer से ज़्यादा एरिया होता है bioreserve zone. So second number, where would we find tigers in Gujarat? Tigers, okay, where would we find tigers in Gujarat? गुजरात के अंदर हम टाइगर कहाँ दिखने के लिए मिलते हैं? Tiger was seen in the forest of Idar. Where would we find tigers in Gujarat? So tigers were seen in the forest of Idar, Ambaji and Dhata. मतलब पास्ट के अभी टाइगर फॉरेस्ट गुजरात में कहीं पर भी नहीं है, पर where would that? कहाँ पर थे वो? So कौन से एरिया पर पाए जाते थे? इट वॉज फाउंड इन द एरियाज ऑफ फॉरेस्ट इडर, अंबाजी, दांता वाला जो रीजन है, ओके, वो फॉरेस्टेड एरिया है. ये एरिया के अंदर वो टाइगर पहले थे, लेकिन अभी वहाँ पर वो नहीं है. वहाँ से मध्य प्रदेश वाला जो फॉरेस्ट एरिया, अरवली फॉरेस्ट, वो सब कुछ होता है वहाँ पर, तो वो एरिया के अंदर पहले थे इडर, अंबाजी, दांता. अभी वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर गुजरात में कहीं पर भी टाइगर नहीं. आपने जू में देखा वो बात अलग है, बट नेचुरल हैबिटेट में टाइगर गुजरात में कहीं पर नहीं है. Stage reasons for forest destruction. Forest destruction के लिए what are the reasons why forests are destroyed? Due to human interference, forests are decreased. Human interference, construction of roads, mining, railway tracks, and that cause a decrease of forest areas. And due to over exploitation of a forest, over use of a forest, exploitation of forest, many made by the main which greedy motives. As a human beings agree to satisfy the needs, the demands of a people, the requirement, we exploit the forest, such as a road बनाने के लिए, multi-purpose project, dams which are constructed over rivers which has a multiple use, minings of minerals, expansion of a new settlement, expansion of a city area, village areas, okay, और cities को expand करते उस टाइम पर forest को काट दिया जाता है. So these cause the forest destruction, इसकी वजह से ज़्यादातर forest destruction होता है. And forest lands are being encroached for the grass, okay, for the grass में grazing के लिए, animals के grazing के लिए, for the fuel के लिए, for grazing के लिए उनका भी use किया जाता है forest का. So forests are destroyed. Fourth, write notes about the wildlife on the verge of extinction. So wildlife presently are on the verge of, on the border of extinctions here. So मतलब extinct, if we do not take care of those wildlife, it will extinct on the earth. बहुत सारे ऐसे birds, animals है जो कि ध्यान नहीं रखेंगे तो future के अंदर they will not found on the earth और in our country के अंदर वो species of birds और animals का हमें नहीं दिखने के लिए मिलेगा. So today many wildlife in the world are on the verge of extinction. And the verge of extinction, अभी number of species बहुत कम बच गए हैं. If we do not take it, it will extinct. It will not found on the earth surface. Tiger were found throughout the India during the last centuries. If we look at the last centuries, tigers were found in throughout the India. Even in the Gujarat के अंदर भी tiger थे. But presently tigers are not found in Gujarat. So tigers were seen in the forest of Idar, Ambaji, Danta. Today tigers are totally extinct from Gujarat forest.
गुजरात नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर टाइगर्स आर नॉट फाउंड, सो टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द गुजरात. चीता इज ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट. ओके, जो चीता था इंडिया, चीता जो बोला जाए इंडिया के अंदर चीता कहीं पर नहीं है. ओके, चीता इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट के अंदर से एक्सटिंक्ट हो गया. Some of the bird species like a vulture, duck with a pink throat, cranes and owls are on the verge of extinction. In the verge of extinction, इसकी species बहुत कम. If we do not take care it, will extinct. ये एक दिन गायब हो जाएगी यहाँ से. चिलोत्रो बर्ड्स, चिलोत्रा बर्ड्स का नेम है. वंस वाइड स्प्रेड इन अरुणाचल ऑफ नॉर्थ ईस्ट. अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में चिलोत्रो बहुत दिखाई देता था. So now it's not easy seen. अभी वो easily not seen easily, अभी वो easily नहीं दिखाई देता ये चिलोत्रा जो बर्ड है वो. And there is a danger of survival of a alligator of a fresh water of a river Ganga and alligator. There is danger of alligator, fresh water crocodile, alligator है. उनके लिए भी गंगा रिवर जो डॉल्फिन है उनके लिए भी ये फ्रेश वाटर का जो डॉल्फिन है उनके लिए भी प्रॉब्लम है अभी सर्वाइव करने के लिए. Danger of survival. And number of sea turtle approaching to the coast of Odisha, Gujarat is constantly decreasing. Continuously number of turtle reaching and Odisha coastal Gujarat के अंदर जो आते हैं वो भी कम हो रहा है. Waterfall, जल बिलाड़ी, once found in Narmada. It was a questions in a last 2025 मार्च के अंदर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा गया था कि वाटरफॉल जल बिलाड़ी का एक क्वेश्चन था. फाउंड इन फ्रिक्वेंटली नर्मदा रिवर उनका आंसर आता था. नर्मदा रिवर विच रिवर करके क्वेश्चन पूछा गया था. और तापी, मही एंड साबरमती रिवर ऑफ गुजरात इज ऑलमोस्ट इन एक्सटिंक्ट हियर. ओके, ऑलमोस्ट जो जल बिलाड़ी थी वो एक्सटिंक्ट हो गई है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. व्हाट इज मीन बाय अ सेंचुरी? What is it mean by century? Bioreserves are centuries क्या होता है? Wildlife centuries established on the protection of some species के लिए establish किया जाता है. And the centuries can be established by government after certain process, certain rules and regulation and term and condition के हिसाब से centuries are established. And human activities are permitted with certain limit. Look at human activities are permitted. National park and wildlife sanctuary. National parks, human activities are totally banned. While in national sanctuary जो होता है wildlife sanctuary, human activities are permitted with certain limit. बहुत लिमिट के साथ उसका human activities यहाँ पर अलाउ की जाती है. Domesticated animals can be allowed to graze after. Domesticated animals are allowed. जो buffaloes, cows, those people who are living in the outskirts of a forest area, they are allowed to graze their animal, but with the permission from the authorities. Even national park के अंदर जो बायो रिजर्व है उसमें टोटली बैन कर दिया जाता है. वहाँ पर तो नेशनल पार्क में टोटली बैन है ग्रेजिंग्स ऑफ अ डोमेस्टिक एनिमल इन द फॉरेस्ट एरिया. व्हाट इज नेशनल पार्क? नेशनल पार्क है. So compared to the sanctuary, this is a more protected zone and more than one ecosystems are included here. Larger area के अंदर था, more than one ecosystems are included here. There is a complete ban on animal grazing. Complete ban on animal grazings. And there is a so it is not centered around one species. It is so it is in a sanctuary. As it is sanctuary generally फोकस्ड ऑन स्पेशल जो एनिमल्स होता है उसकी स्पीशीज होगी या उसके लिए बनाई जाती है. वाइल इन नेशनल पार्क नॉट फोकस्ड ओनली वन birds or any animals here, they are focused on number of other animals centered around the, it is not centered around the one species. Number of species are captured included there and for the protection of trees ये सब कुछ इसमें आता है. So it is established through the coordination of states and central government. National parks are established. Third number, in which state is a Nal Sarovar located? So Nal Sarovar आपको पता है कहाँ है? इस सरोवर is located in Gujarat. इंदौर से नज़दीक आता है नल सरोवर. ओके, ये आंसर तो यहाँ पर ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुके हैं, आप देख सकते हो. विच वाइल्ड लाइफ इज एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात? टाइगर. ओके, फॉरेस्ट ओवर विच लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जो म्यूनिसिपलिटी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको ये बोलेंगे community. And how many species of animals and birds are seen in the world? So it's in a 15 lakh. That's all. This is the exercise of lesson number 9 का exercise है.
So I hope you like these videos, and if you have any queries, you can send me this email address. You can contact me in this email address. We can also comment in this video box. Okay, so comment है वहाँ पर comment कीजिए. We'll answer your questions here. Okay, and so आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. कोई भी डिफिकल्टीज है तो पूछिए. दूसरे वीडियोज अपलोड होते रहेंगे. आप पुराने वीडियो आप देख सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर से, और ये वीडियो का बॉक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा. ओके, थैंक यू.